तो अब हम रिज्यूम करते हैं यहाँ से। उत्तराखंड गवर्नमेंट लॉन्चेस मुख्यमंत्री सोर्स स्वरोजगार योजना। द एम right the aim of the scheme is to encourage the production of green energy and to provide the self employment opportunities to the youth of the state and returning migrants. Under this scheme, each beneficiary will be allotted solar plants of 25 kilowatt and 10,000 people will get self employment, right? अब कुछ उत्तराखंड के फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसकी कैपिटल कौन सी है? गैरसैंण इन समर, देहरादून इन विंटर। गवर्नर बेबी रानी मौर्य, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। केरला बिकेम्स अ फर्स्ट state digital in public education. Fine. So the state of Kerala is the first state in the country to make public education completely digital. Facts about Kerala. Kerala highest literacy rate है कंट्री में। इसकी कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। Kerala forms welfare fund board. Kerala forms a welfare fund board for farmers. For the first time in the country, Kerala government had decided to set up a welfare fund board for the farmers. Kerala Krishka Shimanadi board for welfare and upliftment of farmers in the state. According to Kerala Krishka Kshemanidhi Act, agriculture includes many things like horticulture, nursery management, medicinal plant cultivation, poultry, ducks, goats, rabbits, livestock, fish, ornamental fish, mussels, bees, silkworms, and maintenance, as well as use of land for such agriculture purposes. Gujarat government announces setting up of the world's biggest गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, वो क्या सेट करेगी? वर्ल्ड्स बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर कॉम्प्लेक्स इन कहाँ पर? इन दोसावाड़ा इन तापी डिस्ट्रिक्ट, तापी में। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट वाज साइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट विद वेदांता ग्रुप सब्सिडरी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड विल सेट अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जिंक स्मेल्टिंग complex at Tapi in Gujarat. Hindustan Zinc is India's largest and world's second largest. Hindustan Zinc is India's largest and world's second largest zinc lead miner कंपनी। अब गुजरात के बारे में कुछ देख लेते हैं। कैपिटल गांधीनगर है। गवर्नर आचार्य देव व्राट और चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। फाइन। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस द जगन्ना विद्या कानुका scheme for students in government schools. Under this scheme, right, this many kids, 423422 kids will be distributed. 42,34,222 kids will be distributed to students of government schools studying from class 1 to 10 standard. This kit comprises 3 pairs of uniforms, a belt, a school bag, 1 pair of shoes, 2 pairs of socks, prescribed textbooks and notebooks. Right? Goa becomes the first Har Ghar Jal state across India to provide tap water connections to every rural household. The aim of the Jal Jeevan mission is to provide piped water to all rural households by 2024. It was launched on 5th August 2019 को लॉन्च किया गया था। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट, 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। हर घर को पाइप्ड वाटर देना है सारे रूरल हाउस होल्ड्स को बाय 2024। फाइन, आगे चलते हैं। इंडिया फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर? इन गोरखपुर, यूपी। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंटर डेडिकेटेड टू रेड हेडेड किंग वल्चर विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ गोरखपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उत्तर प्रदेश एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी and technical help will be provided by the Wildlife Research Institute. The red-headed vulture is also known as Pondicherry vulture, Asian king vulture, and the Indian black vulture. According to the census 2013 to 14, approximately 900 vultures were found in 13 districts of UP. तो इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ खोला गया? गोरखपुर, यूपी में खोला गया। ठीक है, इस सेंटर की जो एस्टेब्लिशमेंट इट इज़ डेडिकेटेड टू रेड हेडेड
to the red-headed king vulture, right? और रेड हेडेड किंग वल्चर को और क्या कहते हैं? पौंडीचेरी वल्चर भी कहते हैं, एशियन किंग वल्चर एंड इंडियन ब्लैक वल्चर। फाइन। तो और इसके बाद अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2013 to 14 अप्रॉक्सीमेटली 900 वल्चर्स वर फाउंड इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। फाइन। आगे आगे चलते हैं। आगे हैं असम सीएम सर्बानंद सोनोवाल अनाउंस द प्रत्ययतन संजीवनी स्कीम। प्रत्ययतन संजीवनी स्कीम will help the tourism entrepreneurs of the state in regaining their business. Under this scheme, an interested entrepreneur can get a loan from ₹1 lakh to 20 lakh। एक लाख से 20 लाख तक आपको क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। द स्कीम इज फॉर द रजिस्टर्ड स्टेक होल्डर्स लाइक द होटलर्स, रिसोर्ट ओनर्स, टूर ऑपरेटर्स, टूरिस्ट गाइड, जीप सफारी, elephant safari and other engaged in the sector। Fine। Now UP government backs 8 awards in Garib Kalyan Rozgar Abhiyan। UP government has backed 8 awards in Garib Kalyan Rozgar Abhiyan launched by the Department of Drinking Water and Sanitation under the Union Ministry of Jal Shakti। The state has also got overall second rank। उसे सेकंड रैंक भी मिली है किसमें? यूपी को, इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गंदगी मुक्त भारत स्कीम। फाइन। तो इसने 8 अवार्ड्स लिए हैं इन द गरीब कल्याण रोजगार अभियान। फाइन। तो लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ, किसने लॉन्च किया था? बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। राइट। द स्टेट हैज़ ऑल्सो गेट ओवरऑल सेकंड रैंक किसे मिला है? गंदगी मुक्त भारत स्कीम में भी। और यूपी को पहला रैंक मिला है किसमें? इन द गरीब कल्याण रोजगार अभियान में। फाइन। इन द गरीब कल्याण रोजगार अभियान में। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बेसिकली ये है क्या? ये लॉन्च किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया initiative to tackle the impact of COVID-19 on laborers and workers. It is a rural public work scheme which was launched on June 2020 को, right? UP government launches U-Rise portal. UP government launched a unified portal called U-Rise. U-Rise means unified reimagined innovation for students empowerment with the Department of Technical Education Department, Training, Employment and the Skill Development Mission along with Dr. APJ Abdul Kalam Technical Education Lucknow UP। Note: U-Rise portal would benefit and empower students by providing all possible information from online exams, digital contact, digital assessment, digital examination papers, webinars, internship, e-library, recorded video content to employment. In the first phase, polytechnics, vocational and skill development, and in the second phase, a target has been set to link all the engineering universities of the state. Fine. Now next is Kerala wins United Nations Award for outstanding contribution for prevention and control of non-communicable diseases. The UN Interagency Task Force, ठीक है, केरला wins UN United Nations Award for outstanding contribution for prevention control of non-communicable diseases. UN Interagency Task Force award this year on prevention and control of non-communicable diseases was announced by WHO, World Health Organization. Non-communicable diseases वो होते हैं, these are the non-infectious health condition जो स्प्रेड नहीं होते एक पर्सन से दूसरी तरफ. So this is also known as chronic disease including the heart disease, stroke, cancer, diabetes and chronic lung disease are collectively responsible for almost 70% of all the deaths worldwide. Rajasthan government launches a Moksha Kalash Yojana 2020. Yes, this scheme is to allow free bus travel to 2 persons of a family to immerse the ashes of their loved ones in the Ganga in Haridwar in the, ठीक है ना. The State Road Transport Corporation, the state road transportation इसकी नोडल एजेंसी है स्कीम की. असम गवर्नमेंट लॉन्चेस मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अकोनी. Under this scheme, the government distributed vehicles to beneficiaries to improve rural connectivity and generate employment in the villages. Light motor vehicle service to be launched in the villages of the state, and 1 vehicle per village would be provided to 1 beneficiary. इस स्कीम के तहत eligible entrepreneurs will be assisted financially with 25% of the cost of the vehicle by the state government or ₹1 lakh whichever is less. Fine. Plan to set up a film city in UP.
ठीक है। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ अनाउंस टू सेटअप अ फिल्म सिटी इन गौतम बुद्ध नगर by the Yamuna Expressway Industry Development Authority. Film City is an integrated film studio complex. Fine. मुख्यमंत्री 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 किसान कल्याण योजना टू बी स्टार्टेड बाय चीफ मिनिस्टर मिस्टर शिवराज सिंह चौहान इन एमपी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, इस स्कीम के तहत एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस 4,000 का दिया जाएगा टू द एलिजिबल बेनिफिशियरीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि। About 80 lakh farmers of the MP will be benefited Kisan Kalyan Yojana. Now they will be able to get annual assistance of rupees 10,000. 6,000 तो वहाँ से मिलेंगे, ठीक है, किसान कल्याण योजना के तहत, ठीक है, और 4,000 ये साथ में और देंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या था? ये एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट के, जिसमें सारे फार्मर्स विल गेट अप टू 6,000 पर ईयर एज अ मिनिमम इनकम सपोर्ट, ठीक है। द इनिशिएटिव वाज टू बी अनाउंस्ड इन 2019 में ये अनाउंस किया था। एमपी टारगेट हाउस होल्ड टैप कनेक्शन इन ऑल रूरल एरियाज अंडर जल जीवन मिशन बाय 2023, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट is constructing water infrastructure so that rural families of MP can be provided with a clean drinking water through tap connection. Public health engineering department is constructing, कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट is constructing water infrastructure so that rural families of MP can be provided with a clean drinking water through tap connection. The target for completion of this scheme in the rural areas of the entire state is by the year 2023 under the Jal Jeevan Mission. Basically Jal Jeevan Mission है क्या, ये मैं हम पढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से restructure and subsume the ongoing national rural drinking water program. नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम को इन्होंने सबस्यूम कर दिया किसमें? जल जीवन मिशन में। टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड दैट इज हर घर नल से जल बाय 2024। पीएम मोदी लॉन्चेस ऑप्टिकल फाइबर फॉर इंटरनेट सर्विसेज इन बिहार, राइट। इट एम्स टू कनेक्ट all 45,945 villages in the eastern state through the internet and provide digital services such as e-education, e-agriculture, telemedicine and telelaw. Optical fiber एक मीडियम है, एक टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एज a light pulses along with a glass or a plastic strand or a fiber, right? Now MP celebrates गरीब कल्याण वीक एज वन अधिकार दिवस, राइट। ये पढ़ चुके हैं हम एमपी के करंट अफेयर में, ठीक है। इन MP गरीब कल्याण वीक is being organized from 16 to 23rd September to mark the birth of Prime Minister Narendra Modi. On the fourth day, वीक के फोर्थ डे में वन अधिकार दिवस was celebrated in the state and more than 23,000 forest rights pattas were distributed in 47 districts of the state. Chief Minister Shivraj Singh Chauhan in Bhopal and ministers as well as public representatives has distributed forest right pattas to the beneficiaries in other districts. Gujarat government launches Mukhyamantri Mahila Utkarsh Yojana. The scheme will provide interest-free loans to the women's group in the state under the Mukhyamantri Mahila Utkarsh Yojana. 50,000 joint liability and earning group will be formed in urban areas. Fine. And Manduadhi becomes Banaras. Manduadhi railway station has been renamed as Banaras in UP by the Union Home Ministry. Fine. तो मंदुआधी को बनारस बना दिया गया, रीनेम कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान टू इनॉग्रेट पोषण सरकार program. The month of September is observed every year as a month of nutrition under the nutrition campaign, right? और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? पोषण सरकार प्रोग्राम is to eliminate the malnutrition by the helping the ग्राम पंचायत and the urban bodies in the nutrition campaign. इस प्रोग्राम के तहत न्यूट्रिशन रेजोल्यूशन will be passed in all ग्राम पंचायत, नगर पंचायत and urban bodies. Fine. महाराष्ट्र Chief Minister launched My Family, My Responsibility initiative against COVID. Every family in the state will be checked on at least twice in the coming month. The health checker will monitor family members, senior citizens and oxygen levels. In the case of an ailment, the government health official will be informed. This management has to be done at the micro level
and so all the sarpanch should take responsibility for their villages. PM Narendra Modi launches various projects under Namami Gange and Amrut schemes in Bihar. PM Narendra Modi inaugurated and laid the foundation stones for 7 projects related to urban infrastructure in Bihar under Namami Gange and Amrut schemes through video conferencing. Among these, two to sewerage treatment and 1 to riverfront development. 2 to sewerage treatment and 1 to riverfront development, and 4 projects are related to the water supply. The total cost of this project is 541 crore rupees. Fine. New aims at Darbhanga. New aims at Darbhanga in Bihar approved by cabinet. This approved the proposal for the aims at Darbhanga, Bihar. Aims will be established under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana scheme. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम ये इंट्रोड्यूस की गई थी 2003 में to correct imbalances in the availability of tertiary healthcare services and improve the quality of medical education. The scheme has 2 components: setting up of new aims and अपग्रेडेशन ऑफ सेलेक्टेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन जो हैं उन्हें अपग्रेड करना और एम्स को इस्टेब्लिश करना। ये बेसिकली 2003 में लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ताकि इम्बैलेंसेज हैं जो जगह जगह पर यहाँ पर टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल रही उसे इम्प्रूव करना, ठीक है, और मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना, ठीक है। आगरा मुगल म्यूजियम टू बी रीनेम्ड आफ्टर शिवाजी। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ अनाउंस अ डिसीजन टू रीनेम, ठीक है, टू रीनेम्ड अंडर कंस्ट्रक्शन मुगल म्यूजियम इन आगरा आफ्टर छत्रपति शिवाजी महाराज। गरिमा स्कीम लॉन्च्ड बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट फॉर सैनिटेशन वर्कर्स, राइट। गरिमा स्कीम एम्स, गरिमा पहले ये किसने लॉन्च किया? उड़ीसा में लॉन्च किया, किसके लिए? सैनिटेशन वर्कर्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो aims to ensure the social dignity and economic safety of core sanitation workers in the state. Garima scheme will be implemented by the State Housing and Urban Development Department in all the 114 urban local bodies of Odisha. Around 20,000 core sanitation workers and their families with about 1 lakh population will benefit from the scheme. The core sanitation workers and their family members will be covered under the health insurance scheme with the regular health checkups, housing, educational sport, mobility sport and mobile sport. Fine. 9 new airports in 15 months in UP. Union Minister for Civil Aviation Ashok Gajapati Raju said Uttar Pradesh would get 9 more airports. Uttar Pradesh would get 9 more airports in next 15 months. 9 airports will come up in Allahabad, Bareilly, Aligarh, Azamgarh, Moradabad, Chitrakoot, Jhansi, Mayurpur, Sonbhadra and Shravasti. PM Narendra Modi to dedicate the nation 3 key projects in Bihar related to petroleum sector. The projects include 2 LPG bottling plant in East Champaran and Banka and Durgapur Banka section of the Pradeep Haldia Durgapur pipeline augmentation project. E-office system of Madhya Kshetra Vidyut Vitran Company. तो ई ऑफिस सिस्टम ऑफ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल, ये पढ़ चुके हैं हम। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल, ये इज़ द फर्स्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इन द कंट्री इन विच मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल इन विच द ई ऑफिस सिस्टम is being opened from the corporate office to local circle level offices. There is no physical movement of the file and corona infections also being avoided. A human contact is minimum. Special force to be constituted in UP to provide security to the high court, district courts and administrative offices and buildings. So special force to be constituted in UP. So metro rails, airports, banks, financial institutions, educational institutions and industrial units. UP government has taken the decision to constitute a fresh special force. The force will constitute 9,919 personnel. 5 battalions will be constituted in the first phase and it will be headed by ADG ranked officer. Expenses estimated in the first phase will be around 1,747 crore rupees. Air ambulance service. Wait, एक मिनट. Air ambulance service. Karnataka CM recently inaugurated the air ambulance service. कहाँ पर? Air ambulance service in Bengaluru. This is the first integrated air ambulance service in the country. Right?
Air ambulance service recently inaugurated the air ambulance service in Bengaluru. This is the first integrated air ambulance service in the country. Also, it happened to be the first air ambulance based out of South India, providing services for medical emergencies. So, air ambulance service, Karnataka CM recently inaugurated the air ambulance service in Bengaluru. Authority involved air ambulance firm. कौन अथॉरिटी इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व है? एयर एम्बुलेंस फर्म, इंटरनेशनल क्रिटिकल एयर ट्रांसफर टीम and aviation technology firm Kyati from the HAL Hindustan Aeronautics Limited Airport in Bengaluru. Fine. So Veer Savarkar flyover. Veer Savarkar flyover inaugurated by Karnataka. Veer Savarkar, commonly known as Swatantra Veer Savarkar or simply Veer Savarkar in Marathi language. He was an Indian independence activist and politician, formulated the Hindu nationalist philosophy of Hindutva. He was a leading figure in the Hindu Mahasabha. He opposed the Quit India movement in 1942. The book The History of the War of India, उनकी बुक कौन सी है? वीर सावरकर, The History of the War of Indian Independence. Barrister Savarkar was the first biography of Savarkar under the pen name Chitragupta, and the second edition by the Veer Savarkar Prakashan. Fine. Government of Andhra Pradesh and Lawrence Dull Agro Processing Limited, that is LEAF. लीफ की फुल फॉर्म देख लो, लॉरेंसिटल एग्री प्रोसेसिंग नहीं, ये लीफ की फुल फॉर्म वेट. आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट साइंड 8 पैक्ट्स विद रिगार्ड ग्लोबल एंड डोमेस्टिक प्लेयर्स. दिस memorandum of understandings will help the food processing sector of various agriculture products including banana, tomato, mango, sugar, chilies, vegetables and aqua products. Basically लीफ कहा जाता है किसको? Lavrendical agro processing of India. Lavender Agro Processing is India's leading end-to-end supply chain specialist in fresh produce. With this expertise in post-harvest management, we are pioneering India's most trusted fresh produce brand, LEAF. LEAF stands for Safe and Hygienic Fresh Produce. Electronic Hardware Manufacturing Policy 2020. The Tamil Nadu Chief Minister Illapadi Palaniswamy released the state's electronic hardware. अब ये देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020. ये किसने किया है? तमिलनाडु ने. फाइन. तमिलनाडु. द टारगेट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वर्थ $100 billion. The Tamil Nadu Chief Minister Edappadi Palaniswamy released the State Electronic Hardware Manufacturing Policy 2020. The manufacturing of electronic goods worth $100 billion by the year 2025. टारगेट क्या है? 2025 तक उन्हें इतने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने हैं. इट इनविसेजेस मेकिंग द स्टेट contribute 25% of the country's total electronic hardware export. It aims at attracting semiconductor fabrication units to the state. Mobile phones, LEDs, fables, chips, printed circuit boards, solar photovoltaic cells, and medical and automobile electronics are some of the areas that are being given focus in the new policy. Fine. Himachal Pradesh and World Bank. The government of Himachal Pradesh and World Bank signed 82 million loan. The government of Himachal Pradesh and World Bank signed 82 million loans for the implementation of Himachal Pradesh State Roads Transformation. Himachal Pradesh State Roads Transformation project, which will strengthen the transport and road safety institution of Himachal Pradesh. राइट. इन्होंने साइन किया है ताकि हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सके. बस आपको इतना करना है, हिमाचल और वर्ल्ड बैंक के बीच में साइन हुआ क्या, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट. फाइन. तो बेसिकली वो इम्प्रूव करेगा कंडीशन, सेफ्टी, रेजिलियंस एंड इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्टेट रोड नेटवर्क. Cannabis medicine project. The first ever cannabis medicine project will be set up in Jammu with the Canadian collaboration. It is a joint project set up with the collaboration of Canada at the Indian Institute of Integrative Medicine in Jammu. The medicine prepared from this plant can be utilized even for export to other countries. A few other projects are also being set up through the Council of Scientific and Industrial Research. इसके आपको याद रखना, ये जम्मू में सेटअप हो रहा है विद द कैनेडियन कोलाबोरेशन, और ये सेटअप हो रहा है थ्रू द काउंसिल. अ फ्यू अदर प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो बीइंग सेटअप थ्रू द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. Assam promotes nutritious food, right? Assam promotes nutritious food promoted through kitchen garden as a part of Poshan Ma.
As a part of Poshan Ma, the Social Welfare Department in Assam has taken steps to promote nutritious food through kitchen garden. Kitchen garden, Nutri garden will be set up at Anganwadi centers and government primary schools across the state. The aim is to plant locally available nutritional food and vegetables. Karnataka approves new IT policy. Karnataka cabinet recently approved a new information technology policy to help the state increase its contribution towards the goal of a. So Karnataka approves new IT policy. Karnataka cabinet recently approved a new information technology policy to help the state increase its contribution towards a goal of $1 trillion digital and increase and create 6 million jobs during the policy period, right? The new policy from 2020 to 25, the government said would help in Karnataka retaining and leveraging its position in technology and innovation. Fine. So this much for today. Thank you.